जो साउथ अफ्रीका से निकलकर वापस इंडिया आए, इंडियन मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर। Nihal, if you are watching the test match, no, I think the test match is done. What, जो भी आप देख रहे हो, please be on mute. Good evening. Good evening, students. Good evening, sir. Good evening, sir. Okay. Sir, हाँ बोलो. my father has pinged you some questions which I have doubts. So when will you clear that? I'll just go through it. I have not seen the message, or I think I missed it something. So I'll just look into it and I'll let you know. Okay. Sir, will we be discussing the test paper answers? Yeah, I'll take a extra class someday and then I'll discuss it. Okay. Not today because पहले तो important is that I complete the chapters. Then we'll get extra time. So that time we'll do it. So that's why I'm taking some extra like extra time in the classes instead of 7 to 8. I'm taking 6:45 to 8:15 or 8:30. Okay, so just tell me. Okay, sir. Last time we were doing time and work. So have we completed the full worksheet? Yes, sir. अच्छा पूरा complete कर दिया है ना ठीक है. So that means we have to start with the new chapter. Did I teach you something that day? Sir, you taught us speed, distance, and time. Yes, sir. And so you said it does not have any paper, so we were doing sums from the past question papers. Okay, okay, understood. Okay, ठीक है. Just wait for a minute then. Okay. Please be on mute, Arav. Okay. So I think we had started from 2015 paper. Do you remember? Yes, sir. So same way we'll now continue with those questions and here. So now we'll solve 2022 paper. Okay, speed, distance, times के बारे में जो भी सवाल है वो कर लेंगे हम. Okay. It is question number 8. A train which is 225 meters in length passes a pole in 9 seconds. आपको दिख रहा है ये या बहुत छोटा लिखा है? आई थिंक इट्स नॉट दैट क्लियर, राइट? ओके. Is the question clear? A train is passing a pole in 9 seconds. So this is a train, let's say, which is 225 meter long. This is a pole. So इसको cross करना है means distance traveled is how much? Yes? 225 meters. Correct. So for 225 meters distance, time is equal to 9 seconds. Speed is 225 upon 9, which is 25 meters per second. Understood? So we got the speed of the train. Now this same train, okay, is going to pass a tunnel. So this is the tunnel of length 450 meters. So first is I have to travel this 450 meters, okay, and then the length of the train.
So total distance traveled is 450 plus 225. Speed is equal to 25 meters per second. So time is equal to distance divided by speed, which is 675 upon 25. What will be the answer? 27 seconds. Understood? Yes, sir. Abhi Sir, without, I just listen, those who have just joined, it's okay. We are solving speed, distance, time. And for question number 8 from 2022 paper. Now there is one more shortcut way to solve it without finding the speed. So first part they have given distance is 225 meters and time is equal to 9 seconds. Now see the second part. अभी आपको question पढ़ के समझ गया है that tunnel cross करना है मतलब tunnel का distance भी add हो जाएगा. So total distance will become train length plus tunnel length, which is 450. So which is 675. So we need to find the time. If you see the relation between 225 and 675, what is the relation? 675 is equal to 225 into 3. Correct? So therefore, yes, sir. time will be 9 into 3, which is 27 seconds. Has everyone understood this? So if it's only related, then only we can use this, right? What? Only if the distance and the total distance is related. Then otherwise we'll use this first method. First find out the speed. And Okay. Okay, sir. हाँ बोलो, ask me, what is your doubt? So I just joined, so I was just asking, we are doing time work distance, Time past distance question papers yes. questions, right? Correct, yes. So we did question. Okay, thank you, sir. Yes. Vaibhavi, please be on mute. Vaibhavi, please be on mute. Vaibhavi, please be on mute. Has everyone understood this question? Yes, sir. sir, can you send this paper on WhatsApp group? I don't, it is from the book. So do you have the past question paper book, students? If you don't have, then let me know on the group. I'll Yes, sir. Yes, sir, I have. Yeah, those who have No, just sir. listen to me. Those who have just keep the book with you, okay? And those who don't have, I'll see how you will get the sums. Otherwise, just take the screenshot whenever I'm writing all the questions, okay? अगर यही chapter के लिए, because I don't think the worksheet is there for this chapter, but let's see what can be done. Okay, question, Okay, question sir. number 39 from the same paper, 2022. So the distance given is 30 kilometers. Okay. Now there are two people. One is Kriti and the other one is Alia. Okay. So Kriti takes 2 hours more than Alia. Okay. So let's take इनका जो time है. If Alia takes X hours, so she will take X plus 2 hours. Correct? Now they have said, Yes, sir. let the speed be let's say Kriti के लिए something and Alia के लिए कुछ और, but we are not mentioning it now. Okay, या फिर हम मेंशन कर देते हैं, चलो लेट्स से
the speed will be how much? तो यहाँ पर स्पीड कितना होगा? 30 अपॉन x प्लस 2 एंड यहाँ हो जाएगा 30 अपॉन x. समझ में आया कैसे? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस. Yes, sir. Now they have said in the second condition, स्पीड अगर डबल कर दिया कृति का, तो डबल मतलब कितना हो जाएगा? 30 अपॉन 2x प्लस 2, सॉरी 2x प्लस 2x plus 4. हाँ. देन शील टेक 1 आवर लेस देन आलिया. तो आलिया का ये जो स्पीड है, इससे जितना टाइम लग रहा है और इसमें 1 आवर का डिफरेंस रहेगा. करेक्ट? यस और नो? सो टाइम विल बी हाउ? Yes, sir. कृति का टाइम कितना हो गया? टाइमिंग विल बी 1 hour less than Alia, sir. सो टाइम टेकन. देखो अगर ये स्पीड है तो टाइम इज एक्चुअली, हमने यहाँ पर कुछ फर्स्ट वील हैव टू कंसिडर ओनली वन केस. तो फर्स्ट लेट्स कंसिडर देयर स्पीड इज, स्पीड के हिसाब से कंसिडर करते हैं. ठीक है? क्योंकि दोनों जगह इक्वेशन सेम बन रहा है. फिर या तो देखो ये क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक सबसे इजी तरीका बताता हूँ. इंस्टेड ऑफ मेकिंग ऑल दिस इक्वेशंस, जस्ट चेक द ऑप्शंस. ओके, सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन दे हैव गिवन, which is 6, here it is 5, 6.25 and 7.5. अभी क्या करना है? हमें पूछा है कृति का एक्चुअल स्पीड कितना है. ओके, दिस इज द क्वेश्चन. सो लेट ऑल दिस बी. सो कृति का पहले क्या दिया है? शी टेक्स 2 hours मोर देन आलिया. अभी अगर कृति का स्पीड इज 6 kilometers per hour, तो टाइम टेकन विल बी हाउ मच? 5 hours. Okay. If Kriti's speed is 5 kilometers per hour, तो speed time taken will be 6 hours. 6 hours. 7.5 के लिए स्पीड कितना हो जाएगा? 4 hours. 4 And hours. 6.25 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 30 divided by 6.25, 4.8 hours आ रहा है. ठीक है? ओके. Yes, sir. अभी ये सब टाइम अगर हम कंसिडर करें, दिस इज 2 hour मोर देन आलिया's टाइम. यस और नो? Because in the question they have given, in covering a distance of 30 kilometers, Kriti takes 2 hour more than Alia. तो आलिया का क्या हो जाएगा यहाँ पर? 3 kilometers, 3 hours. 3 hours, sorry. यहाँ पर 4 hours, 4 hours. 2.8 and यहाँ पर 8 hours or 2 hours. यहाँ तक सभी को समझ गया है? This is the speed, okay? Yes, sir. Okay. Now अगर कृति ने स्पीड डबल किया तो आलिया से 1 hour कम लगेगा. करेक्ट? अगर कृति का स्पीड अभी डबल हो गया, मतलब न्यू स्पीड इज हाउ मच? टेल मी. सबका ऑप्शन बताओ. यहाँ पर 12 हो जाएगा, यहाँ पर 10, यहाँ पर 12.5. 1.5. Arnav, please be on mute. I'll directly remove you from the class, okay? And यहाँ पर हो जाएगा 15. Okay? तो न्यू टाइमिंग फॉर कृति विल बी हाउ मच? 2.5 hours over here. Yes or no? 30 Yes, sir. से डिवाइड किया 2.5, 30 को 10 से डिवाइड किया 3 hours. 12.5 से करो ही मत, अभी ये छोड़ दो और ये भी छोड़ दो. कैन यू सी द डिफरेंस इज 1 hour over here? Yes, sir. That is 1 Is your hour. answer speed of Kriti is 5 kilometers per hour. Okay. समझ में आया? सबको समझ में आया? I'll explain it Yes, again. Okay? Yes, sir. I'll explain it again. Question number 39. So total distance is 30 equal to kilometers. 30 kilometers. So they have given us, in covering this, Kriti takes 2 hours more than Arya. Okay. First part. Second part क्या दिया है? If speed of Kriti, Distance is no, distance is same. If speed of Kriti is doubled. Okay. She takes
1 hour less than Alia. So can you please go to the previous slide for 1 minute? I want to take प्लीज screenshot. वेट, ये मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्वेश्चन के साथ, तो इसका स्क्रीनशॉट लो. Okay, sir. So this is the question. So the options are 6, second one is 5, third one is 6.25, and fourth one is 7.5. Now one more thing, students, when such type of questions are asked, okay, first solve natural numbers, don't go for decimal one, okay. तो ये दोनों को पहले हम इग्नोर करेंगे. If we get answer from these two, it's very good, then no need to check. अगर नहीं मिलता है तभी हम जाएंगे next options पे. Okay, this is the speed. Is it clear, everyone? Okay, distance is 30. So for the first part of the question, Kriti will take how many hours if she's traveling at 6 kilometers per hour? 5 hours, correct? And Alia will Yes, take, 30 hours. Alia will take 3 hours. समझा? Yes. For the second Yes. option, Kriti will take how many hours? 6 hours. And SARS. Alia will take, 4 hours. very good. अभी इसके बाद क्या करना है? स्टॉप ओवर हियर. अभी कृति का स्पीड डबल हो गया है, तो अगर कृति का स्पीड डबल हो गया है तो टाइम हाफ हो जाएगा. यस और नो? Yes, sir. 2 points. तो पहले ऑप्शन में इसका क्या हो जाएगा? स्पीड का टाइम चेंज होके आएगा 2.5 आवर, 2.5 hours. एंड यहाँ पर टाइम आएगा 3. 3 आवर्स. 3 hours. अभी आप चेक करो, सेकंड कंडीशन में क्या दिया है? स्पीड डबल होने के बाद कृति विल टेक 1 आवर लेस देन आलिया. तो 1 आवर लेस किधर है? Less यहाँ than पर है. सो आंसर इज 5 kilometers B option. per hour. Understood, everyone? Now you can take a screenshot or note it down. Hello. Hello, sir. Yes. Sir, I did not understand the last part. Read the question. Read the question. Read किया question? Okay, which part Yes, you sir. didn't understand? Tell me now. Sir, that Kriti speed is 2 times wala. तो क्वेश्चन में क्या लिखा है? अगर कृति का स्पीड डबल कर दिया है, ओके, करेक्ट. तो अगर स्पीड डबल किया है तो टाइम टेकन विल बी लेस, हाफ हो जाएगा टाइम टेकन. यस और नो? प्लीज आंसर यार. किसने डाउट पूछा है मुझे? सर, मैंने सर. क्या नाम है आपका? तो जब मैं कुछ पूछ रहा हूँ आप यथार्थ. फिर से जवाब दे सकते हो क्या? वरना मत पूछो डाउट मुझसे. अगर Sorry, sir. जवाब देना है तो पूछो, वरना मत पूछो. इज इट क्लियर? Yes, sir. अगर स्पीड डबल किया है तो टाइम हाफ होएगा कि नहीं, ये बताओ मुझे यथार्थ. Yes, sir. Time half होगा. हाँ, क्योंकि अगर लेट से अभी पहले केस में था 30 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 5 आवर्स, 5 इफ द स्पीड इज 5, तो यू गेट टाइम एज 6 आवर्स. अभी अगर आपका स्पीड डबल हो गया मतलब 10 हो गया, तो टाइम कितना हो गया? 3 आवर्स. तो ये इसका हाफ हो गया. तो हमने क्या किया? अगर जब पहले 5 आवर्स लग रहा था तो उसका हाफ करके टाइम हो गया 2.5 आवर्स. जब 6 आवर्स लग रहा था टाइम, तो अभी स्पीड डबल होके टाइम हो गया 3 आवर्स. ओके, सो दैट इज व्हेन द स्पीड, कृति स्पीड इज डबल्ड. और अभी हमें क्या दिया है? जब कृति का स्पीड डबल हो गया है तो वो 1 घंटा कम लेगी आलिया से. तो आलिया टेक्स 4 आवर्स ओवर हियर एंड शी विल टेक 3 आवर्स. So here we get the difference as 1 hour. So speed of Kriti is how much? 5. Okay, sir. Sir, done. Very good.
Yes, sir, even I'm. ओके अभी 2020 का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं ओके सो इन दैट we'll do question number 40 which is related to this. A motorist covered a distance of 340 kilometers between city A and city B. So distance is how much? 340 kilometers. In 5 hours. So time taken is 5 hours. If part of the distance is covered at 60 kilometer and the remaining at 80 kilometer per hour, how many hours did the motorist travel at 60 kilometers per hour? तो इसमें से कुछ distance travel किया है, speed was 60 and sometime the speed was 80. Okay, we need to find out how much distance is traveled at this speed. Is it clear? The options are 2 hours, second one is 2 hours 30 minutes, third one is 3 hours and 30 minutes, and fourth option is 3 hours. Is the question clear? आपको क्या पूछा है और क्या करना है? Sir. Yes, sir. ओके देखो अभी इसके दो तरीके आप या तो पहले ऑप्शन से सॉल्व करो ठीक है तो इफ वी स्टार्ट विद सॉल्विंग द ऑप्शन सो फर्स्ट ऑप्शन इज व्हाट 60 into 2 so 60 into 2 is 120 kilometers Yes, sir. remaining is how much out of 340 if 120 is removed how much is remaining 220. so 220 is traveled at what speed 80 so if you divide this by 80 we don't get 3 hours do we get 3 hours Yes. no No, sir. तो टोटल 5 आवर्स चाहिए यहाँ पर 2 आवर्स हो गया यहाँ पर 3 आवर्स नहीं हो रहा है तो मतलब ये ऑप्शन कैंसिल आउट करेक्ट तो पहला ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया अभी फोर्थ ऑप्शन चेक करते हैं तो 60 into 3 is 180 डिस्टेंस रिमेनिंग कितना हो गया 160 इज रिमेनिंग डिवाइडेड बाय 80 Yes, sir. तो हमें मिलेगा 2 आवर्स 20. तो यहाँ पर 2 Yes. आवर्स हो गया और यहाँ पर 3 आवर्स हो गया तो टोटल टाइम हो गया 5 आवर्स जो हमारे पास Yes. क्वेश्चन में दिया है सो 60 किलोमीटर के स्पीड पे हाउ मच डिड ही ट्रैवल 3 hours. The 3 hours. 3 hours. Understood? Understood, students? Yes, sir. Sir, due to some network issue, I want to ask a doubt. हाँ बोलो So, why did you divide 160 by 80 or like that? देखो अगर अभी हमने पहले कितना कवर कर दिया है 180 किलोमीटर कवर किया है करेक्ट Yes, sir. हाँ तो रिमेनिंग कितना हो जाए You subtracted from 340. हाँ करेक्ट Okay, understood, sir. Thank you, sir. नोटेड डाउन Sir, done.
Sir, can you hear me? Sir? Sir? Yes students, बोलो. बोलो क्या डाउट है? Sir, Yes. previous question, हाँ. we told us option 2 is the correct answer because 3 hours plus 2 hours is equal to 5 hours. Option 2 नहीं, option 4 is the correct answer. Okay, sir. 3 hours consider. Because He traveled 3 hours at 60 kilometers per hour speed. देखो. yes, sir. Please be on mute now. So speed of train is given as 72 kilometers per hour. It is crossing a platform. So platform is what, where you stand on the near the rail track, okay, in 30 seconds, and a man in 18 seconds, okay. So now we have to make two different equations over here. So for the platform, what will be the total length that the train will travel? Length of train plus length of platform. Yes or no? Yes. Okay. Now see here, length of train is not given, so we have to, that's why I make two equations over here. अभी ये हो गया प्लेटफॉर्म के लिए, and when he is crossing a man, तो क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ मैन को क्रॉस कर रहा है तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? लेंथ ऑफ हाउ मच? Length of train. Very good. So to cross length of train, okay, time taken is 18 seconds. To cross the platform, time taken is 30 seconds. Speed of train is given in kilometers per hour. How do we convert it to meters per second? 2 5 by Multiply 80. into 5 upon 18. 5 upon 18 into 1, 18 into 4, 4 into 5, 20 meters per 20. second. So here we have speed is equal to 20 meters per second. So distance is how much? Distance is equal to speed into time. तो कितना हो गया? 20 into 18, which is 360. 360. This is the distance. मतलब length of train. समझ में आया? Yeah. Yes. Now what is the length of platform? अभी क्या करना है? यहाँ पर डिस्टेंस Length of platform. ये प्लेटफॉर्म के साथ पूरा डिस्टेंस ये फाइंड आउट करना है. सो दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, which is equal to 30 into 20, which is 600 meters. Understood? Now Yes. 100 meters is what? Length of train plus platform. So length of train is how much? 360. 360 meters. So 360 plus platform 6. equal to 600. So length of platform is? 240. Has everyone understood this question? Yes. Yes, sir.
हाँ बोलो अर्नव। Sir, the uh, they have given that it crosses the platform in 30 seconds and the speed in meter per second is 20 meter per second. So can't we just multiply it to find the total distance? बट क्वेश्चन में क्या पूछा है आपको? लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, टोटल डिस्टेंस तो मिल गया बट लेंथ ऑफ ट्रेन भी फाइंड आउट करना पड़ेगा ना, हाँ क्योंकि जब प्लेटफॉर्म क्रॉस कर रहा है मतलब पूरा प्लेटफॉर्म का लेंथ और ट्रेन का लेंथ ऐड करना है, और जब एक मैन स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म क्रॉस कर रहा है मतलब सिर्फ लेंथ ऑफ ट्रेन कैलकुलेट करना है। समझ में आया? yes sir. तो आपने जो किया वो करेक्ट है, पर आपने सिर्फ एक पार्ट ऑफ द क्वेश्चन किया, दूसरा पार्ट आपको करना पड़ेगा। जैसे मैंने ये पहले पार्ट किया, फर्स्ट पार्ट, एंड देन आई सॉल्व दिस। सो फर्स्ट यू हैव फाउंड आउट दिस, सो नाउ देन यू हैव टू फाइंड आउट दिस एंड देन सबट्रैक्ट। Yes. ओके? Yeah. चलो डन। 1 minute, sir. Done, sir. टू 2019 क्वेश्चन नंबर 13। लेंथ ऑफ ट्रेन इज गिवन। Train is equal to 385 meters long. Speed of train is also given as 63 kilometers per hour. You need to find a time taken to cross a electric pole. Sorry, an electric pole. Okay. So time is equal to what? Distance upon speed. अभी देखो इलेक्ट्रिक पोल क्रॉस करना है मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन क्रॉस करना है। समझ में आया? So Yes, sir. it is 385 meters divided by 63 kilometers per hour. The issue over here is one unit is in Meters and kilometer and meters. So if we want, we'll change this. Okay. into meters. 63 into 5 by 18 करेंगे. Okay. 3 से 6 times, 3 से 21, 3 into 2, 3 into 7. So the answer we get is 35 upon 2 meters per second. So now what we'll do, we'll divide this 385 divided by 35 by 2. So we get 385 into 2 upon 35. Understood? Yes. 35 into 1, 35 into 11. 11 into 2 is 20. 22. So the time taken is 22 seconds. Sir, we can change meters also into kilometers per hour, right? Yeah, so like meters को किलोमीटर में मतलब डिवाइड बाय 1000 करोगे तो 0.385 आएगा। 385. हाँ, okay. फिर उसके बाद आपको डिवाइड कर। हाँ बोलो।
Sir, over here you've written 385 meters around 63 kilometers per hour. Sir, but later on in the next step, you haven't written that. Did you pay attention what we did? Who is asking this Yeah. question? Anshita, sir. हाँ, यहाँ पर हमने कुछ चेंजेस किया, वो ध्यान दिया क्या आपने? Yes, sir. क्या किया है बताओ? So we converted it to meter per second. So Sir, if but we have we already also could have converted, so converted this into kilometers, right? what? Sir, we also could have converted 385 into kilometers. Why we'll convert it? If only one quantity has to be converted, why you don't pay attention? अगर एक चीज मीटर में है और दूसरा चीज किलोमीटर पर आवर में है, तो या इधर आप मीटर वाले आइटम को चेंज कन्वर्ट करोगे या स्पीड को कन्वर्ट करोगे. तो वी कन्वर्टेड स्पीड टू मीटर्स पर सेकेंड, देन वी हैव बोथ द क्वांटिटीज इन मीटर्स पर सेकेंड एंड मीटर, which is length of train is 385 meter. तो 385 as it is रहेगा. And then this speed has been converted to meters per second. So then we have used this. So we are not going to write this 63 over here because already we have converted it to 35 upon 2 meters per second. So why will convert then again meters to kilometer? फिर से change हो जाएगा unit. Okay, sir, understood. आपको दोनों यूनिट सेम होना चाहिए. मीटर्स तो मीटर्स पर सेकंड होना चाहिए स्पीड, और अगर किलोमीटर्स में लेंथ है तो किलोमीटर्स पर आवर में स्पीड होना चाहिए. Has everyone understood? Yes, sir. Okay, next question. Question number 5 from 2019 paper. A boy cycles 600 meters in 5 minutes. So distance is 600 meters. Time is equal to 5 minutes. We need to find speed in kilometers per hour. Okay, so it's very easy. So आप लिखो 600 meters over here. Here you have 5 minutes. अभी आपको किलोमीटर पर आवर में फाइंड आउट करना. 1 hour is how many minutes? 60 minutes. So we'll write 60 over here and use unitary method. So how much distance will be covered in 60 minutes? So ये 5 into how much it is? 12. So 600 into 12 करेंगे हम. So 600 into 12 is how much? 7,200, sir. This is 7,200 meters. Now we convert it to kilometers. So 7.2 kilometers per hour. Understood? Correct, sir. Clear everyone? Excuse me, sir. हाँ बोलो. Sir, we can also convert the time from 5 minutes to seconds and then find the speed and change it to kilometer per hour, right? Won't it be more time consuming? Yes, sir. So that you can do. तो आप क्या करोगे? 600 divided by 300, which is 2 meters per second. Correct? Yes, sir. अभी इसको 2 meters per second को 2 into 18 upon 5 करोगे.